माइक का इस्तेमाल अजान के लिए हो और अजान की हद तक रहे और जो कानून सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उस आर्डर के तहत रहे। अजान के अलावा मीनार की माइक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये हमारे बड़ों की राय पहले से भी है। ಅದಾನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಗಳಿದೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡೆಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾನೂನಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ DG ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ. ಯಾವ ಕಾನೂನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. आवाज़ कंट्रोल का मसला है वो ऐसा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो है दिन में 75 डिसिबल, रात में 70 और कमर्शियल में दिन में 65, रात में 55, रेसिडेंशियल एरिया में 55 दिन में, रात में 45 और साइलेंस जोन में दिन में 50, रात में 40। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल हो रहा है और हम सबको इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का पालन करना चाहिए। सिर्फ अब हम लोगों को नहीं, तमाम कम्युनिटीज़ को। तो इस सिलसिले में एक मर्तबा फिर जो है हम जहां तमाम लोगों को, यहाँ के लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि इसका पालन करना ज़रूरी है, वहीं ये हुकूमत को बताना चाहते हैं कि कानून हाथ में लेने का जो दावा करते हैं, फ़िज़ा को ख़राब करने की जो बात करते हैं, जहर घोलने वाली जो तकारीर करते हैं, हेट स्पीचेस करते हैं, ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा कसने का वो काम करें। हेलो माइक चेक 1 2 3। हेलो माइक चेक 45। तुम्हें साउंड कितना बड़ा बढ़ती है, कम होता साउंड बढ़ता। We feel that it should not be selectively applied only for mosques. Rather, noise pollution happens more on the streets and in the nightclubs and such other places. So it should be uniformly applied across every issue. And as regards noise pollution is concerned, from the mosques, the loudspeakers that are used, we have installed devices in the mosques which control the noise to the desired level that has been prescribed by the Noise Pollution Board and that has been approved by the Supreme Court. So we are trying on our part to comply with these orders, and most of the mosques have installed such a device. It is more important that we should not just talk about noise pollution, the hatred that is being spread, the voice pollution that is happening, the irresponsible statements that are being given is a matter of more serious concern, and we request the government and the police to take proper action on these issues. Tell me about the sound controller. How does it work? Ji, Alhamdulillah, whichever the masjids which are coming under the management Jummah Masjid Trust Board, we have installed the sound controller device in all the amplifiers. So what the sound controller device does is, no matter how loudly or slowly the imam speaks on the mic or whatever, so this controller device automatically controls the output of the sound. So for the Fajr, what we have, as per going by the rules and regulations of the government and the courts of our country, so we have successfully implemented this sound controller device, wherein for Fajr we just switch it up to 45 decibels, and after Fajr we go up to 55 decibels. So this is automatic controller which controls the sound, and not only now but from a very long time onwards itself, we've been following the guidelines and the directions day to day, or whichever directions which have been given out by the government or the courts of this country. What's the cost? Tell about the cost and how manufacturing features are. So there is one person from Saad Electronics. So he's the person behind this, behind designing this sound controller device. So it comes at a very small cost of around 2,000 rupees. So how many mosques it has been installed? So we have successfully installed in all the masjids coming under Jummah Masjid. That is like the one you're present over here, it's Khadriya Masjid, then Jummah Masjid on Commercial Street, and Khudusiya Masjid on Nandidurga Road. So this sound control is only meant for mosques, because even temples also do produce sound controls. Can they also be? Yeah, the government orders clearly states the decibel levels, be it residential, industrial or whatever.
and it's equally applicable on all the places of worship. So we have successfully implemented this, and I hope the other churches and temples also, they would have installed such kind of a mechanism which controls the output of the sound.